Hello friends, good morning. Welcome back to Jet Plus Academy channel. Today in sequence how to command geometry foundation. For this I am going to tell you about angles. What are angles? When two lines, suppose that when two lines L and AM line intersect each other, then slope created by this, then slope, whatever slope और इंक्लिनेशन, इसको आप स्लोप बोलिए या इंक्लिनेशन, जो स्लोप या इंक्लिनेशन मिलता है बिटवीन द टू लाइंस दैट इज नोन एज एंगल. ठीक है. और दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O and known as vertex. This is vertex of the angle. ठीक. The point where angle is made, that's known as vertex of the angle, and the lines then assumed as sides of the angle. ठीक है. Now this angle will written be as angle LOM, right? The point where angle is found, that letter is placed between the naming of sides, right? Just like this vertex O at this angle is found, so this will be written amidest L and M. L और M के बीच में ये शो किया जाएगा. ठीक. नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ एंगल्स? टाइप्स ऑफ एंगल इज माय कार्डियल रिक्वेस्ट, वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा. और ये जो पोर्शन चल रहा है यह फॉर अप टू 10th क्लास सभी बच्चों के लिए इसेंशियल और कंपलसरी है. ठीक है. और जो भी अगर आपको लगता है कि देयर इज समवॉट एफिशिएंसी इन दिस चैनल्स टीचिंग and contents, then please like and subscribe the channel and promote to others too. ठीक है. Come on. Types of angles. We are discussing types of angles. Then roughly you can say two types of angle: single angle and pair. Single and pair means single where only one angle is given, that is single type. When there is two angle together given, then that's known as pair of angles, right? Then there are two types, single and pair. Now I am going to tell about what are the single angles. Come on. In single angle, suppose that first of all this is 0 degree. Secondly 90 degree. Third 180 degree. And fourth 360 degree, right? This is 0 degree, 0 angle. This is right angle, and this is straight angle, and this is complete angle, right? Now to this I am giving you frame. आपको एक मैं फ्रेम दे रहा हूँ और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से ट्राई टू अंडरस्टैंड. और ये जस्ट इम्बाइब इट ऑन योर मेंटल स्क्रीन पे इम्बाइब कर लीजिए, और यह थ्रू आउट लाइफ इट विल नॉट बी फॉरगेटन. ठीक है. कम ऑन. यू ड्रा अ सर्कल आप ड्रा करते हैं. दिस इज सेंटर एंड डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स. You are dividing in 4 parts. Come on. Now here each angle, यहाँ 90 degree, 90 degree, 90 degree. This is right 0 degree. This is 90 degree. This is 180 degree, and this 360 degree. Right.
0 degree angle when suppose that this is AB line. AB line खुद से ही AB line पर ही 0 degree angle बनाएगी. It is because there is no existence of slope and slope is 0. That's why this very angle is known as 0 angle. Then suppose that O point and you can take this A point. You take this A point. From O to A, OA makes 0 degree just placing on it OA. ठीक है, OA पर जो है 0 डिग्री एंगल बनाएगा. और when you go 0 डिग्री more than 0 डिग्री से ज़्यादा जाते हैं बट 90 डिग्री से कम रखते हैं, this is acute angle. Then right angle 90 degree is your right angle. More than 90 and less than 180, this will be obtuse angle. And 180 degree is straight angle. 180 degree angle is your straight angle. And more than 180, try to understand. Here I had written 360, but 0 degree, 360 degree will go on 0 degree, right? Sorry for that, just mistakenly I added it there. So from 180 when you go forward, it means more than 80 and less than 60 degree. This angle will known as reflex angle, right? This angle is known as reflex angle, means 180 से ज़्यादा 360 डिग्री से कम, right? OA पर 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री से ज़्यादा जाते हैं 90 डिग्री से कम रहते हैं एक्यूट एंगल. 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा जाते हैं 180 से कम रहते हैं दैट्स ऑब्ट्यूज एंगल. फिर 180 से ज़्यादा, फिर 360 डिग्री से कम, this is known as reflex angle. And 360 degree from 0 degree to one complete revolution, just covering the circumference of all the 4 quadrants, this will make 360 degree, and 360 degree will known as complete angle. Then now I am erasing this one. अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है. कभी बहुत ही विधिवत ढंग से जो इसको हम डील करेंगे. अभी हम रफली चल रहे हैं. कम ऑन, 0 डिग्री और राइट एंगल के बीच में दिस विल बी एक्यूट एंगल, ठीक, एक्यूट एंगल. राइट एंगल से ज़्यादा, स्ट्रेट एंगल से कम, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. स्ट्रेट से देन 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, एंड मोर देन 180 degree but less than 360 degree, this is known as reflex angle. And 360 degree is known as complete angle, right? Then acute angle you can say more than 0 degree but less than 90 degree. Obtuse angle more than 90 degree but less than 180 degree. Reflex angle more than 180 degree but less than 360 degree, right? So these are the types of single angles, right? And sorry, there was much more sweating, क्योंकि फैन को ऑफ करके जो ये वीडियो बनाई जाती है. तो ये आपका रफली जस्ट आई हैव गिवन अबाउट द सिंगल एंगल्स के बारे में, और इसको आप कंप्लीट स्टडी करिए. और जितनी भी वीडियोस निकल रही हैं अब, those are extreme foundation on which the edifice and palace of geometry is erected. So please don't miss any video, and if there is something efficient that can give you a right direction,